नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। बिफोर वी बिगिन आई वुड से डोंट कॉल देम प्रॉब्लम्स, कॉल देम चैलेंजेस एंड फाइंड सॉल्यूशंस। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं। आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज PM calls for new world order. COVID, Ukraine, climate have caused havoc. It is available on page number 3. और ये रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द रीसेंट अपडेट्स रिलेटेड टू G20 समिट इन बाली। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट G20 लीडर्स हैव टू फाइंड अ वे टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ सीजफायर एंड डिप्लोमेसी इन यूक्रेन. He stressed that challenges for the poor citizens of every country are more severe due to COVID pandemic and developments in Ukraine. Our next important headline is Data Protection Bill revised, penalty up to 200 crore if firms don't have safeguards. It is available on page number 3. और ये related है paper 2 Polity and Governance से. In this article we have to know about the features and objectives of revamped version of Data Protection Bill. So friends, government will propose to allow transfer of data and its storage in trusted geographies in the revised draft of the Data Protection Bill, and the new bill will deal with safeguards around personal data and is learned to have excluded non-personal data from its ambit. Our next important headline is Government brings listed essential drugs under price cap. It is available on page number 6. और ये related है paper 2 government policies and intervention से. In this article we have to know about the national list of essential medicines. तो दोस्तों इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि न्यू नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रिलीज्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन सितंबर हैज नाउ बीन ब्रॉट अंडर द ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर which fixes ceiling prices for these essential formulations based on average cost to retailers. Our next important headline is The Low Carbon Pathway. It is available on page number 15 और ये related है paper 3 environment section से. In this article we have to know about the India's plan to go net zero by 2070, outline the key takeaways from the recent announcement at COP27 and what lies ahead. तो फ्रेंड्स इसको हमारी वेबसाइट पे भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है और यहाँ भी शानदार तरीके से इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और ये एक्सप्लेन सेक्शन में भी आया हुआ है। अगर हम ओवरव्यू देखें तो at COP27 India announced its long-term strategy to transition to a low-emission pathway to become carbon neutral by 2070. अगर हम की हाइलाइट देखें तो फर्स्ट इज at least a threefold increase in nuclear capacity by 2032, achieving an ethanol blending target of 20% by 2025, and maximizing the use of electric vehicles, increase public transport, and increase climate finance to be provided by developed nations, right? अगर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें फ्रेंड्स तो द स्ट्रेटजी एम्स एट कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड एम्बिशियसली 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द सेंचुरी एंड, राइट? Our next important headline is No Money for Terror. It is available on page number 15 और ये related है paper 3 internal security से. In this article we have to know about terror financing and what are the channels for financing terrorists and other illegal activities, international and India's efforts to tackle the menace of terror financing and what more steps need to be taken in this context. तो फ्रेंड्स इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम ओवरव्यू देखें कि अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑर्गेनाइजिंग द थर्ड मिनिस्ट्रियल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ऑन 18th and 19th November in New Delhi. And this conference aims to progress the discussions on combating terrorist financing held by the international community in the previous two conferences in Paris 2018 and in Melbourne in 2019, right? Our next important headline is World at the rate 8 billion. India said to be most populous. It is available on page number 16 और ये related है paper 1 population and associated issues से. In this article we have to know about the United Nations Population Fund's estimates for world population and India. तो दोस्तों according to United Nations Population Fund the world population reached 8 billion and India's population growth is stabilizing. बाकी other points के लिए you can go through this article, ठीक? Our next important headline is PESA Act will curb conversions marriages for tribal land. Chauhan. It is available on page number 17 और ये related है paper 2 polity and governance से. In this article we have to know about the features and objectives of Panchayats extension to scheduled areas act. दोस्तों recently मध्य प्रदेश chief minister said Panchayats extension to scheduled areas act will ensure that conversions and marriages done by alluring tribal women to get land notified as tribal land is stopped. अगर हम इस एक्ट की बात करें दोस्तों तो इट गिव्स स्पेशल पावर टू ग्राम सभास इन शेड्यूल एरियाज स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज 9 Russian banks open special Vostro account for rupee trade. It is available on page number 19 और ये related है paper 3 economy section से. In this article you have to know about special rupee Vostro account. तो दोस्तों it is an account held by a bank that allows the customers to deposit money on behalf of another bank. Our next important headline is
Attempt number 3 for Artemis 1 with promise of new space age. It is available on page number 20 और ये रिलेटेड है पेपर 3 स्पेस सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट नासास आर्टेमिस प्रोग्राम. तो दोस्तों इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा आप यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं. ठीक. Our next important headline is Kurdistan Workers Party. It is available on page number 20 और ये related है international section से. In this article we have to know about Kurdish people, their land and language. तो friends, they are major ethnic group who live in mountainous geocultural region known as Kurdistan, which extends from the southeastern Turkey in the west to the northwest Iran in the east and from northern Iraq and northern Syria in the south to Armenia in the north. Right? Our next and last important headline is The Ancient Link Between Kashi, Tamil Land. It is available on page number 20 और ये related है paper 1 Art and Culture से. In this article we have to know what is the ancient connection between Kashi and Tamil Land. तो friends यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से इसको explain किया गया है. आप एक बार go through कर लीजिएगा. बहुत straight forward article है. ठीक. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates you can follow us on various social media platforms.